Welcome back, guys. I'm going to get transfer of thermal energy. Question 3, paper 2, 5054. Let's start. Question 3. Glass and iron are both conductors of heat. However, glass is poor conductor of heat and iron is good conductor of heat. That's why we don't see cooking in glass मतलब जो किचन की चीजें होती हैं मेनली ऑन विच जिस पे चीजें बनती हैं जैसे कि आपका सॉस पैन हो गया कुकर हो गया वो दे आर मेनली मेड ऑफ स्टील्स या स्टील से बनी होती है आयरन से बनी होती हैं तो that is because iron is a good conductor of heat. Describe using ideas about particles how the conduction of heat takes place in glass and in iron. You should make it clear why iron is better than glass at conducting heat. ठीक है. Conduction in glass. Conduction in glass पता है कैसे होती है? Conduction in glass mainly occurs through the vibration. Vibration से होती है जब particles एक दूसरे मतलब vibrate होते हैं ना तो when heat is applied एक जगह पे अगर heat apply होगी ना the atoms and the molecules they gain kinetic energy and when they gain kinetic energy they vigorously start to vibrate. Kinetic energy जब gain करते हैं they start to vibrate in their fixed position and they transfer that kinetic energy to the next particle and then to the next particle then to the next particle. So yeah, glass का atomic structure and इसकी जो lattice होती है that is regular and strong bonds होते हैं और वो hinder करते हैं the movement of particles leading to a slower transfer of heat. ठीक है ना और फिर that makes glass a poor conductor of heat. Therefore yeah. Iron. अच्छा आयरन में जो केस होता है दैट इज अ डिफरेंट केस इन आयरन जो हीट कंडक्शन होती है ना वो तो प्राइमरीली तौर पे ना मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब आयरन को हीट किया गया होगा ना वन एंड से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गेन व्हाट डू यू कॉल इट काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट टू फ्रीली मूव राइट these free electrons will rapidly move throughout the metal carrying thermal energy with them and efficiently transferring across the entire material. Additionally, जो होता है ना iron atoms easily exchange positions. ठीक है ना? That is one other reason why. So I think the explanation is correct. I mean not correct. I mean expressive. तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ जो ग्लास के particles होते हैं ना they are in a fixed position and they vibrate and when heat is applied to a corner तो वो vibration के through kinetic energy transfer करते हैं while on the other hand जो iron होती है iron के अंदर free electrons होते हैं and the free electrons when they gain kinetic energy they will freely move inside the iron and what they will do is वो freely वो करेंगे what do you call it uh, अपनी काइनेटिक एनर्जी वो करेंगे ट्रांसफर करेंगे सो दैट आर द टू क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन था सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर आप मेरे वर्डिंग ले लें इसको दफा मारे दिस इज अ वेरी फजूल आंसर glass molecules vibrate molecules pass on energy vibration from one to another contains iron contains more free electrons that can move electrons collide with atoms molecules and gain slash lose energy. Acha B. Figure 4.1 shows an apparatus used to show expansion. The glass flask full of water is heated. A student is surprised when the liquid level X in the tube falls for a few seconds before it rises. अच्छा, this is because मैं आपको बल्कि दो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको. First being K, thermal expansion happens the most in air. First it happens in air, उसके बाद liquid and then solid. सबसे ज्यादा एयर में होती है फिर लिक्विड में होती है फिर सॉलिड में हो रही है ठीक है ना तो इनिशियली जब हीट अप्लाई हुई ना इसके ऊपर व्हाट यू कॉल इट दिस हीट ग्लास फ्लास्क पे हीट इनिशियली ग्लास फ्लास्क पे अप्लाई हुई है राइट सो द ग्लास फ्लास्क विल एक्सपैंड और जब ग्लास फ्लास्क एक्सपैंड करेगा विदाउट द लिक्विड इनसाइड इट एक्सपैंडिंग व्हाट विल हैपन इज द वाटर लेवल विल ड्रॉप वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ग्लास फ्लास्क विल
expand faster than the water can expand. But eventually, जब transfer energy transfer होगी ना glass flask से into the water will start to expand as well. And when this water starts to expand, it will expand more than the solid. Water जो होता है ना, it will expand more than the solid. Water expands more than the solid. Yeah, I said that thrice. So you have to remember it. Or air expands more than liquid. ठीक है ना? So that is the primary reason why firstly the level falls क्योंकि the glass flask is heated first and it will expand first और उसके बाद liquid will start to expand and liquid will expand more than the glass itself. So yeah, glass flask warms up before water or glass expands first. Water expands more than the glass. These are very bad explanations or answers, I should say. The ones I say is a piece of art. So anyways, मेरी बहुत तारीफ हो गई, आगे चलते हैं. Describe how heat is transferred through the water in the glass flask. Heat is transferred through convection. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कॉमन फिनोमेना. जो डेंसर वाटर होता है ना, दैट इज ऑलवेज कोल्ड. और जो वार्मर वाटर होता है, दैट इज ऑलवेज लेस डेंस. जो वार्म वाटर होगा, दैट इज लेस डेंस ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन. To describe how heat is transferred through the water in the glass flask. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ हीट कैसे ट्रांसफर हुई है. यहाँ हीट लगी है. सो दिस पहले this water will heat up, right? This water will initially heat up and it will go up because जो hot water होता है that is less dense और जो cold water होता है that is more dense. This is due to thermal expansion. जब एक वाटर को मतलब कोई भी वाटर को या लिक्विड को heat up किया जाता है, it will expand a bit, only a bit. It will expand, and therefore, when the volume is increased of an or of a substance and the mass is unchanged, the density will decrease, right? तो density decrease हो गई है. That means वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, mass unchanged है, density will decrease. आगे देख लेते हैं. So the warm water will go up and the cold water will exchange its place. जो cold water नीचे आएगा, that will heat up and go up again. और उसके बाद जो और मजीद cold water होगा, that will go down and the heat up और फिर वापस ऊपर जाएगा. That will create a current. Convection, hot water rises, convection current formed, hot water rises, cold water falls, density of water falls as it heats, just like I told you. So that is it for the video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.